एक और एग्जांपल देखते हैं एलटीआई सिस्टम की, जिसमें डिफरेंस इक्वेशन गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द स्टेबिलिटी। तो डिफरेंस इक्वेशन जो है वो हमें पता है कि स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें लोकेशन ऑफ द पोल चाहिए। लोकेशन ऑफ द पोल जो है वो पोल जीरो प्लॉट से आएगा। पोल जीरो प्लॉट जो है वो एच ट्रांसफर फंक्शन से आएगा। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेप जो है वो ये कि हमने इसका जी ट्रांसफॉर्म मालूम करना। सो वाई ऑफ जी आ गया जी इनवर्स वाई ऑफ जी माइनस हाफ जी डिले टू है जी माइनस टू वाई ऑफ जी कोई डिले नहीं एक्स ऑफ जी माइनस वन एक्स ऑफ जी प्लस जी माइनस टू एक्स ऑफ जी। इन तीनों में से एक्स ऑफ जी कॉमन ले लें। तो एक्स ऑफ जी अगर आपने कॉमन लिया तो आपके पास आ गया वन माइनस जी इनवर्स प्लस जी माइनस टू, और ये दोनों लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे तो ये प्लस है, ये वहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। वाई ऑफ जी कॉमन लेंगे, ये एक्सप्रेशन आएगी। तो वाई ऑफ जी और एक्स ऑफ जी इज एक्चुअली दिस फंक्शन दी रैशनल पॉलिनोमियल। तो इसको ये जी इनवर्स की फॉर्म में तो आप जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आपके पास जी स्क्वायर माइनस जी प्लस वन जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 0.5 आ जाएगा। एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, एक डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है। तो ऑब्वियसली जो आपने पोल की लोकेशन मालूम करनी है तो आपने डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को जीरो करना है। तो जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 0.5 है, तो ये आ जाता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से माइनस बी ये ए वन है सी 0.5 है बी स्क्वायर okay minus b plus minus under b square is b is minus 1 square is 1 minus 4ac which is actually 2 4ac, so that is actually 2 divided by 2a is 1. So this is equal to minus 1 plus minus 1 minus 1 is minus j, so this is minus 1 होता है, तो this is equal to this becomes plus minus j1 divided by 2. So this is the location of the poles. So obviously I'll not write z. Z12 means these are actually the poles. Similarly so these are the poles. Similarly the location of the zeros मालूम करनी हो तो आप डिनोमिनेटर जो z है उसको z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आ जाता है z इज इक्वल माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो न्यूमरेटर है ये जीरोस, सो दीज आर द लोकेशन ऑफ द जीरोस z डैश कह दें। सो बेहतर ये होगा z p1 लिखते हैं z p2, सिमिलरली z z1 01 z z2, तो ये डैश लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, so since the pole zeros does not contribute in the stability, the stability is solely checked by the location of the pole. So if I see this pole, there are two poles P1Z, P1 and P2. इसका P1 P2 is equal to ओके जी, एक अलग अलग करके लिख देते हैं। यहाँ से अगर आप सिंप्लाइज एक पोल जो है वो -1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 है और दूसरा पोल जो है -1 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। तो ये मैग्नीट्यूड जो इसका है वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2 under 2 by 2. So this is under 2 by 2. Usually one this real part और imaginary part बराबर होगा, मैं वैसे ही प्लॉट कर देता हूँ। x is -1, y is +1, so that is here, and this point is here. -1 plus c.
-1 माइनस है, सो -1 माइनस इसका कॉम्प्लेक्स कैंडिडेट नीचे, सॉरी ये तो मैंने दो होल्स की लोकेशन बना दी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो इसका एक्चुअली मैंने ये देखना है कि रेडियस जो है 1 से ज़्यादा ही कम है, ऑब्वियसली इट शुड बी विद इन द यूनिट सर्कल, 1 से कम होना चाहिए। सो √2/2 इज एक्चुअली लेस देन 1, इज लेस देन 1। और सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड भी यही बनता है 1² प्लस रिमेनिंग पार्ट दिस √2/2 इज लेस देन 1 एंड दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो इसलिए ये Z मैं एक्चुअली 1 लिखना चाह रहा था, ये Z P2 Z P1। सो ये जो √2/2 इज इम्पोर्टेंट कि ये कितना है, रूट है divided by 2 is 0.7, I think 0.70 and 1/2 it is actually 0.707. So this is 0.707. So it means that the unit circle is beyond this, because inside और चूंकि causal है, तो ये हम जो ROC है, it is outside this radius of the pole, so unit circle is the part of the ROC, so that is a stable system. So we can find the stability since this point decides the stability is less than 1, I can write just a comment here, then this makes it stable. It's a stable system. और पोल जीरो प्लॉट भी आपने साथ साथ बना दिया। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें ट्रांसफर फंक्शन जो है वो जी ट्रांसफॉर्म एक्चुअली दिया हुआ है, और इसे ये पूछा जा रहा है कि स्टेबिलिटी मालूम करें, इम्पल्स रिस्पांस डिफरेंस इक्वेशन। सो एच ऑफ जी ओवर इज इक्वल टू 1 over 1 माइनस जी इनवर्स। सो ये आप देखेंगे इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म यहाँ। ओके फाइन स्टेबिलिटी से पहले हम बल्कि पहले स्टेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। सो okay, denominator polynomial t of z is equal to 0, which is equal to 1 minus z inverse. So z inverse is equal to 1, तो z से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो this becomes 1 is equal to z. So the location of the pole is at 1. So denominator 0 पर जो root आएगा, that is actually the location of the pole. So pole is exactly on the unit circle. Z is equal to 1 is this point. So this is known as the, okay, this is not a stable system, or it is marginally stable. Usually this is known as marginally stable, which actually dictates कि हमें चूँकि यूनिट सर्कल पार्ट ऑफ ROC नहीं है, तो इट्स स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये नॉन स्टेबल सिस्टम है। लेकिन चूँकि हम यूजुअली स्टेप रिस्पांस में, ओके ये इसका ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट इम्पल्स रिस्पांस है, जिससे हम मजीद इसके बारे में डिस्कस कर सकेंगे। तो इम्पल्स रिस्पांस मालूम करने के लिए इट इज़ ऑलवेज इन दी फैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। सो एच ऑफ जी का जो इनवर्स है दैट इज other way around लिखना चाहिए। So this is h of n and this is the inverse z transform of u of n. It means that impulse response is just a unit step function, and this is h of n 0, 1, 2, 3 and so on. So impulse response is of infinite duration because of this infinity here. So this is an IIR filter. Because it has a feedback, this denominator, so it's और difference equation अगर आप इसकी देखें तो उसमें difference equation भी देख लेते हैं। जब मैंने देख लिया h of n u of n है, so
क्यों इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो है कि जो एच एफ एन है इट शुड बी यानी फॉर स्टेबिलिटी वी ऑल्सो चेक that impulse response absolute summation should be less than infinity. तो आप 1 को infinity टाइम ऐड करते जाए 1 2 3 4 ग्रो करते जाएंगे सो it's less than e infinity does not satisfy because HFN its stability ये कंडीशन है जबकि हम इसको अगर हम ऐड करें अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स को n is equal to minus infinity HFN is actually U of n is equal to infinity. So 1 plus 1 plus 1 करते हैं तो that becomes u0 u1 u0 ये u1 ये u2 सबको ऐड करते हैं it is infinity it's not stable. You can see from the pulse response. तो ये जो है ये जो स्टेबिलिटी थी हम इम्पल्स रिस्पॉन्स है और ऑब्वियसली अब हम डिफरेंस इक्वेशन भी मालूम करेंगे. तीसरा पार्ट जो है ये पहला पार्ट ये था पोल जीरो प्लॉट था दूसरा पार्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स था और स्टेबिलिटी चेक करना था इसमें और तीसरा जो है डिफरेंस इक्वेशन. इस डिफरेंस इक्वेशन के लिए हम इसको y ऑफ z ओवर x ऑफ z इज 1 ओवर 1 माइनस z इनवर्स और इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें y ऑफ z माइनस z इनवर्स y ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ z. तो इसका अगर आप इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लें तो ये आ जाता है x ऑफ n इज इक्वल टू y ऑफ n माइनस y ऑफ n माइनस 1 because of these z inverse and y of n. In other words, y of n यानी एक्चुअल आउटपुट जो मालूम कर रहे हैं सिस्टम की it is equal to the x of n plus the previous output. Current output plus previous current input plus previous output is actually the current input. So हम ये देखते हैं ये क्या चीज़ है. अगर हम इसको ये रिकर्सिव है so it is IIR filter. Difference equation is recursive so it's an IIR filter. Impulse response को देखिए वो भी इसकी ड्यूरेशन इनफाइनाइट है. अगर हम इसमें वैल्यूज डालते जाएं तो सी वी फर्ज करें हम यहाँ पे वैल्यूज डालते जाएं दो तीन वैल्यूज हम मालूम कर लेंगे. ओके सो करते करते आप इन्फिनिटी का वाई एफ एन जनरल एक्सप्रेशन भी डेवलप कर सकते हैं. ओके व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली वी वांट टू फाइंड वाई करंट टू जीरो सो व्हेरेवर आई सी एन आई रिप्लेस जीरो. सिंस इसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स में यू एफ एन एन से लेस देन जीरो जीरो सो दिस गेट्स जीरो. So we get current output is based on current input. Y 0 is x 0. अब y of 1 मालूम करना है so यहाँ पे 1 into minus 1 which is equal to y of 1. So y of 1 so x of 1 क्या है? It is x of 1. So 2 minus 1 is y of 1 so sorry यहाँ पे 1 डालूंगा. जहाँ जहाँ n नजर आएगा वहाँ पे 1 डालना है. So 1 minus 1 is 0. So y of 0. Y of 0 is actually x of 0. Okay. जहाँ जहाँ n नजर आएगा 2 डाला, 2 डाला, 2 डाला. So y of at instance 2 is x of 2
plus y2 minus 1 is y1. y1 is actually x of 0 plus x of 1 and so on. तो इसका मतलब है करते करते अगर आप nth टर्म को मालूम करना चाहें, सो यू आर एडिंग ऑल दी इनपुट्स करंट से लेके जहाँ से शुरू हुए थे वो, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली. सो आई कैन राइट लाइक दिस. समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं k is equal to 0 to infinity. So x of k is the index of k 0 to infinity x of 0 plus x of 1. So तो ये जो है this is actually known as the accumulator. जिसका काउंटर पार्ट डिजिटल में जो है वो इंटीग्रेटर है. Okay, so it is actually adding all the previous values to find any current value. So this should be okay. So ये हो गया एक्यूमुलेटर. या हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये पॉजिटिव प्लॉट यूनिट सर्कल पे तो इन्फिनिटी क्यों है उसके दो रीजन हमने देख लिए. अब ये FIR की पहली एग्जांपल आप देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि FIR क्यों है, बिकॉज देयर इज नो फीडबैक, ओनली करंट. और एक तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स भी एक्चुअली जो है वो फाइनाइट ड्यूरेशन का है, वो भी बाजार यहाँ से नज़र आ रहा है, अभी आप भी देख लेंगे. सो नो फीडबैक हिंस, सो हिंस इट्स FIR फिल्टर. तो सबसे पहले हम इसको मालूम करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स. पार्ट 1 पे आ गए. तो इम्पल्स रिस्पॉन्स मालूम करने के लिए हमें मालूम है कि अगर किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स मालूम करना हो तो एक्सफैन जो है वो एज ए डेल्टा फंक्शन आप अप्लाई कर दें. So xfn is a delta function, तो yfn would be hfn. इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जहाँ मैं अभी पहले इक्वेशन दोबारा कॉपी कर देता हूँ. xfn minus 8 तो if the input is fn is delta n minus delta fn minus 8, or then the output yfn is actually hfn. So we can find the impulse response directly from this particular equation. तो अब जो है वो हमने देख लिया कि इम्पल्स रिस्पॉन्स को अगर आप प्लॉट करें, सो ये फर्स्ट के 0 है, 1 2 सो ऑन, यहाँ पे कहीं पे 8 है. तो 0 पे वी हैव एन इम्पल्स और 8 पे वी हैव एन इम्पल्स, और बाकी सब वैल्यूज हैं दे आर इन फैक्ट 0. सो ऑब्वियस है कि hfn हैज अ फाइनाइट ड्यूरेशन, सो इट्स अ FIR filter. तो अब हम पहले हम ट्रांसफर फंक्शन, इम्पल्स रिस्पॉन्स मालूम हो गया. सेकेंड अब आते हैं ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन है कि वो हम उसका डिफरेंस इक्वेशन का z ट्रांसफॉर्म है, yfn का z ट्रांसफॉर्म बाय z, ये हाफ x of z माइनस z माइनस 8 x of z. ये आ गया. ओके, इसमें से x of z कॉमन ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे. This becomes half 1 minus z minus 8. So this is actually h of z.
तो Z में वी डोंट हैव अ ओके सो प्लॉट जो है वो चूंकि इसमें डिनोमिनेटर में नज़र नहीं आ रहा बट एनी हाउ वी विल सी के ये कंडीशनली ये अनकंडीशनली स्टेबल है FIR फिल्टर में स्टेबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम पोल जीरो प्लॉट जो करेंगे. सो पोल जीरो प्लॉट करने के लिए वी डोंट हैव अ सो ओके let's rephrase this. As of Z go in terms of E minus 8 I will express this in terms of positive power of Z. So what I'll do is I'll multiply this by Z8 and divide by Z8. So I'll get Z8 minus 1 over Z8 multiply by half. तो अब हम अगर न्यूमरेटर को पहले ज़ीरो करते हैं कि ज़ीरोस देख लेते हैं, which means that z raised to power 8 minus 1 is equal to 0. So this means that 0 raised to power 8 is equal to 1. और चूँकि पोल जीरो प्लॉट है तो समहाउ सर्कल से इसका कुछ ताल्लुक है, तो हो सकता है 1 हमें पता है कि e raised to power j 2 pi is 1. So Z8 पहली बात हम जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि e raised to power j 2 pi is 1. लेकिन कैसे कि 0 फिर ये 2 पाई फिर 4 पाई ओके पहले दोबारा से रिपीट करता हूँ. ज़ीरो यहाँ पे पूरा गल चक्कर लगाया, फिर आप यहाँ पे आए 2 पाई यानी 0 भी यहाँ पे है 2 पाई 4 पाई, ये सारे जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई है सारे एक्चुअली. सो यू राइट एक्चुअली k e raised to power k 2 pi is actually this is the location of the poles. तो इसमें k अब Z8 है is equal to e raised to j 2 pi k. तो अगर हम इसका 8th रूट लें, so this becomes z, and because there are 8 number of poles, so उसको सबस्क्रिप्ट में k लिख देता हूँ. e raised to power j 2 pi over 8 into k. So these are, और k कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 पाई के बाद रेपिटेशन हो जाना शुरू हो जाती है, तो ये 1 2 3 जब तक k जो है वो 8 हो जाएगा, एक्चुअली 7 होगा क्योंकि 8 पे आप दोबारा वहाँ पे पहुँच जाएंगे. सो 2 पाई को क्योंकि 0 भी इसमें शामिल है तो 8 रूट्स बनेंगे जब आप 7 तक पहुँचेंगे. 1 से 7 तक 7 है और 0 भी ऐड कर देंगे तो दिस इज 8, जिसका एक्चुअली मतलब ये है कि वो जो जीरोस हैं पोल जीरो प्लॉट में जिसका रेडियस 1 है, ये यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में आप इसके 2 पाई के ये जो एक्चुअली 2 पाई और 8 है, इसका मतलब है कि ये 2 पाई को 1 2 3 4 ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गया और फिर फर्दर ये 8 हिस्सों में तकसीम हो गया. सो 2 पाई ओवर 8 जो है, यानी 2 पाई को 8 हिस्सों में डिवाइड करें. दीज आर द लोकेशन ऑफ द जीरोस. सो इन फैक्ट आई विल राइट दिस इज अ 0 हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि Z8 is equal to there are 8 poles actually at the origin. So इसका मतलब 1 2 3, so there are 8 poles at the origin. So इस केस में जितना मर्जी है फिल्टर का ऑर्डर हो और फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो, तो तमाम जीरोस तमाम पोल्स जो है they will be on the origin. So they will not contribute, they will not be unstable.
when they are at the origin, so unconditionally stable. तो ये पोल जीरो प्लॉट से हमें पता चला तमाम पोल्स में दे आर इनसाइड द यूनिट सर्कल, और जो ऑरिजिन है ऑब्वियसली इससे बड़ा ऑरिजिन से आगे कहीं भी चले जाएं तो आरओसी हो जाएगा, एक्सेप्ट जीरो इट्स द आरओसी. सो इट मीन्स दैट z greater than 0 is the ROC, so it means that it's a stable system unconditionally. Okay, so this is the pole zero plot and this is a stable system. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें पूछा जा रहा है प्लॉट मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स एंड ग्रुप डिले. तो अब हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफर फंक्शन है या ट्रांसफर फंक्शन में हम evaluating the z transform at z is equal to e j omega will give us half 1 minus e raised to 1 minus 8j omega. So this is the frequency response, which can be written as h of z जाना था e j omega लिखते हैं. तो इसको प्लॉट करने के लिए बेहतर है कि आप इसका हाफ से इसकी एवरेज बाहर निकाल दें. सो एच ऑफ ई जे ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 टी रेज़ टू पावर, इसका जो हाफ है इट्स -4j ओमेगा. तो यहाँ पे अगर आप +4j ओमेगा लिखते हैं तो दे ऐड अप एंड दिस पे 1 और माइनस यहाँ पे -j4 omega. So this is the condition here. 0.5 नीचे चला जाएगा तो यहाँ से ये 0.5 is actually 1/2. So I'll directly write 2 downstairs here. But इसके साथ j भी होना चाहिए. So j क्योंकि नेगेटिव साइन है तो j बनता है. So this becomes, so the transfer function is actually, sorry, frequency response is j e raised to power minus 4j omega, and this is actually sine of 4 omega. So this is the frequency response of this particular FIR filter. So now we want to find the magnitude and phase response. So first we'll find the magnitude response. So that is the magnitude of this thing. Magnitude of j is actually 1. j यहाँ पे होता है ना, यूनिट सर्कल अगर आप सर्कल देखें तो j यहाँ पे, तो this length is 1. So magnitude of j is 1. Magnitude of complex exponential, it's a rotating phasor on the origin, so it has also a magnitude 1. So it means that this depends upon sine of 4 omega magnitude. So sine of 4 omega का जो magnitude है उसमें हमें पता है कि sine का जो magnitude है it is 1 +1 and -1, और जो ओमेगा है जीरो क्रॉसिंग हमने मालूम करनी है. तो 4 ओमेगा कहाँ पे जीरो है, दैट इज द क्वेश्चन, इज एक्चुअली साइन इनवर्स एंड इट इज 0. साइन इज 0 एट दी, साइन कहाँ पे 0 होता है, 90 पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. when it is an integer multiple of pi. 4 omega is 0 when it's an integer multiple of pi. So हमने मालूम करनी है कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे 0 क्रॉसिंग है. No, it is k pi by 4. So अब हम ये देखते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं. ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इट्स अ साइनसॉइडल फंक्शन ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी 4. सो इट इज अ 4 ओमेगा. हमारे पास जो स्केलिंग है, हम स्केलिंग करते हैं पाई तक, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. फिर 1 2 3 4 5 6 कर दिए तो 1 2 3 ये पाई बाय 2. ओके, दिस इज अ लिटिल बिट बेहतर है कि हम इसको सिंपल रखें ताकि
no issue now. This is 1, 2, 3, 4. This is pi. This is pi by 2. This is pi by 4. And this is 3 pi by 2. So ये एक चीज़ तो हमने देखा कि साइन फंक्शन जो है वो कितनी दफ़ा ज़ीरो होगा, एक पाई बाय 4 पे ज़ीरो होगा, k1 डालूंगा तो पाई बाय 4 पे ज़ीरो है, और जब ज़ीरो हो तो क्या होगा, ओमेगा इज ज़ीरो, तो साइन ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो, सो इट गोज अप, और फिर पाई बाय 4 पे ज़ीरो होगा, सो इट वुड बी साइन फंक्शन लाइक दिस, मैग्नीट्यूड 1. फिर ये अगेन इट्स अ साइन फंक्शन, ओके, ये मुझसे दे शुड बी इक्वल. सो दिस लुक्स, दिस इज प्रॉब्लमैटिक. आपको फिगर to have to compromise on that. Magnitude, so 1, 2, ये हो गया पाई बाय 4, फिर ये पाई बाय 2, यहाँ तक 3 पाई बाय 2, यहाँ 4 पाई बाय 2, which is actually, sorry, 4 pi by 4, this is actually pi. तो साइन फंक्शन 0 पे 0 है, फिर यहाँ पे 0 है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है 1. फिर there is something like this, then there is something like this, there is something like this. तो 4 जगहों पे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 फ्रीक्वेंसी जो है वो, यानी इसको यूजुअली दिस इज नोन एज अ कॉम्ब फिल्टर, कंगीत तरह, एक दंदा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कॉम्ब फिल्टर है, और ये एटेन्यूएट कर रहा है. सो ये शो क्या करता है, सो इट्स नोन एज अ कॉम्ब फिल्टर. इट रिमूव्स DC, which is omega is equal to 0, and fundamental and its harmonics, fundamental which is pi by 4, और इसके harmonics, and its harmonics. It's an 8th order filter because there are 8 poles or zeros there, so this is an 8th order filter. So 8th order comb filter. So comb filter के एडवांटेज आप देखें, ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और उसके हार्मोनिक्स को अटेन्यूएट करता है या उनको completely ब्लॉक कर देता है. So this ये तो हो गया फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, सॉरी मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स. अब मैं यहाँ से दोबारा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को उठाता हूँ, जो सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन थी वो ये. अब फेज रिस्पॉन्स प्लॉट कर दें. अच्छा, फी जे ओमेगा का एंगल आपने मालूम करना है. So that is the angle of these two quantities. These three which are in products में एंगल्स ऐड होते हैं, एंगल ऑफ जे प्लस एंगल ऑफ J4 omega plus angle of sin of 4 omega. Okay, so this is in radians. You can write in degrees also. So angle of J is pi by 2, which is 90 degree. So I am writing in degrees. और ये इसमें J के अलावा जो है that is actually the angle minus 4 omega. और यहाँ पे साइन जो है वो एंगल ऑफ साइन जो है, साइन आपको पता है कि साइन आधे साइकिल में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव होता है. जब पॉजिटिव होता है तो वो इस राइट साइड पे होता है, इस साइड पे होता है, तो इस साइड पे एंगल जो है वो 0 है. तो जब वो एंगल 0 है, लेकिन जब ये नेगेटिव साइड पे आएगा, जैसी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री व्हिच इज पाई. सो इट मींस दैट व्हेन द
sign is positive, the angle is 0, and when the sign is negative, the angle is pi. So we have to add this pi whenever it gets negative. So कहाँ पे था? अब sin of 4 ओमेगा, वैसे मैं यहाँ पे डेसिमल्स में प्लॉट करें. So this is sine of omega, sine of actually x, और sin of 4x अगर आप देखें तो हमारे केस में sin of 4x है. So आप देखेंगे वो जो एक इट्स एक्चुअली इंक्रीज, द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है. तो जिसमें एक साइकिल था यहाँ तक, ये एक पॉजिटिव पीक है, एक नेगेटिव पीक है, तो अब इसकी 1 2 3 4 पीक्स आ रही है, 4 टाइम्स, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई 4 टाइम्स. तो जब अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, सो मैग्नीट्यूड इज शोन बाय दिस साइन हियर. तो आप क्या करते हैं कि वही जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो नेगेटिव हैं मैग्नीट्यूड में, उनको पॉजिटिव कर देते हैं. तो वो नेगेटिव कौन सी साइकिल में होती है? इस साइकिल में. हर एक साइकिल छोड़ के जो नेक्स्ट साइकिल है, एवरी ये सेकंड साइकिल इज द वैल्यू इज नेगेटिव. तो इसलिए अब प्लॉट करना आसान है इसको. और ये दिस इज नोन एज जनरलाइज्ड लीनियर फेज. यानी ये जो पहले मैं लिख दूं कि ये जनरलाइज्ड लीनियर फेज है. जनरलाइज्ड लीनियर फेज as it has also this y-intercept. When a normal linear phase में there is no y-intercept, but here we have also some constant here which acts as an intercept. तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, so प्लॉट करने के लिए I'll need this thing here. So अब चूंकि मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ, तो साइन वेव भी मैंने आपको दिखाया कि साइन वेव जो है वो, सॉरी एक्सिस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, इसको दोबारा कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है क्योंकि इधर नीचे गया था मैग्नीट्यूड में, चूंकि ये प्लस हो जाता है, तो इधर इन जगहों पे साइन नेगेटिव है. ओके, सो दिस वी नो. और अब मैं प्लॉट करता हूँ एंगल. somehow I'll extend this downwards. y इंटरसेप्ट पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और पाई -4 ओमेगा है. इसका मतलब है कि स्लोप -4 है. फॉर 1 स्टेप यू गो डाउन बाय 4 स्टेप. उससे भी आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक तो पता चल गया स्लोप नेगेटिव है, तो मुझे पता है कि मैंने यूं जाना है. और दूसरा ये कि पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है. सो यहाँ पे फर्स्ट करिए पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे स्टार्ट हो रहा है. सो it will linear increase till this point. So it's like this. और फिर क्या होगा, यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो वहां पे -पाई बाय 2 होगा. तो ये -पाई बाय 2. देन देयर इज अ जंप. यहाँ पे जैसी वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये लीनियरली इंक्रीज करेगा. और जैसे पाई बाय 4 तक ये लीनियर इंक्रीज कर रहा है ना, तो जैसे ही ये पाई बाय 4 आएगा, जैसी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो वी विल हैव अ जंप ऑफ पाई. सो इधर वी हैव अ जंप ऑफ पाई.
So pi by 2 or pi by 2 has a jump of pi, so it will go up by pi, and then same like this. और फिर यहाँ पे अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो पाई बाई 2 का जंप होगा। जब आप इधर से इधर जाएंगे फिर एक और जंप होगा ना। So this jump is of pi jump, and that is coming from this negative value when the sign is getting negative. तो obviously जब आप यहाँ पे है तो फिर तो एंगल 0, लेकिन यहाँ से इधर आएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव होंगे तो एक जंप पाई आएगा। जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव होंगे तब भी जंप आएगा, बिकॉज यू आर मूविंग 180 डिग्री. So that is shown by this one. So this is actually the angle part of H. So it is a generalized linear phase since there is a y-intercept which is pi by 2. Okay, the group delay is represented by tau and represented by GRD of H of E j omega, group delay of E j omega is equal to minus d upon d omega of H of E j omega. तो इसका डेरिवेटिव में पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या है? 0. माइनस 4 ओमेगा का डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव डेरिवेटिव है ना, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। और 0 भी चाहे 0 हो या पाई हो, दोनों केस दोनों नंबर्स हैं, दोनों का डेरिवेटिव 0 है। So 4 sample is the group delay. So if I plot the group delay, plot the frequencies, omega pi by 2, pi by 4, pi by 2, pi. So the group delay is 4 samples. So which means that all the frequency will have the same number of sample shifts, so there is no shift left and right. So this is the basic advantage of the FIR filters, that will have a we don't have a phase distortion actually, और ये linear phase जो है, it is only possible in digital filter. So this is not possible. This is very difficult to achieve. It's not possible to achieve in IR filters.